लंबा लड़ाई रही प्रतीक्षार अंत इन द हाईकोर्ट ऑफ ओडिशा कटक WPC नंबर रही 18,706 बाई 2015 देखिपे 15 मसीह 24 मसीहा दीर्घ 10 वर्षर लड़ाई सुरेखा सामल एंड अदर्स पिटिशनर रही वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा एंड अदर्स अपोजिट पार्टी रही फॉर पिटिशनर महेंद्र कुमार साहू थिले एडवोकेट SK रथ एडवोकेट थिले अपोजिट पार्टी पाई रही गवर्नमेंट तरफ SN पट्टनायक एवं DN रथ रही अपोजिट पार्टी तरफ PK बेहरा मध्य रही अपोजिट पार्टी तरफ जस्टिस शशिकांत मिश्र कोर्ट रे 28 मार्च 2024 रे आसी जजमेंट द ऑर्डर डेटेड 21/8/15 पास्ड बाय कलेक्टर कम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिला परिषद भद्रक मिसकेस नंबर 3/14 परसुआंट टू डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट WPC नंबर 5077/2014 एंड बेच इज अंडर चैलेंज इन द प्रेजेंट रीट एप्लिकेशन यही चैलेंज होता WPC नंबर 5077/2014 पर कलेक्टर जो ऑर्डर आसला मिसकेस नंबर 3/14 फैक्ट थिला एडवर्टाइजमेंट इश्यू होता बाय द कलेक्टर भद्रक ऑन 8/11 एप्लिकेशन इनवाइट होता एलिजिबल कैंडिडेट एंगेजमेंट ऑफ शिक्षा सहायक द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड थिला कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड +2 एग्जामिनेशन साइंस आर्ट्स कॉमर्स और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन डिक्लेयर्ड बाय एप्रोप्रिएट अथॉरिटी एंड सिटी ट्रेनिंग pursuant to such advertisement the petitioner submitted their application a merit list was prepared for all categories of candidates petitioner number 1 was placed in serial number 11 of the merit list petition number 2 at the serial number 4 of your merit list and petitioner number 3 at serial number 1 of SCBC female list in the initial provisional merit list of different categories vocational course qualified candidates were not included जेहेतु vocational course रो कैंडिडेट को इनक्लूड करा जाय नथला सेथिपाई से माने मेरिट रे थिले फॉर व्हिच सम ऑफ देम अप्रोच्ड दिस कोर्ट को अप्रोच करथिले 6438/2011 6458/2011 बाय ऑर्डर डेटेड 18/3/11 ये कोऑर्डिनेट बेंच ऑफ दिस कोर्ट डिस्पोज्ड द रिट पिटिशन डायरेक्टिंग दैट द केस ऑफ कैंडिडेट who have completed +2 vocational course with city training shall be considered से कंसीडर करिया पे कह जायथिला जिला परिषद भद्रक को दिया जायथिला निर्देश से मध्य अकॉर्डिंगली तांको इनक्लूड करथिले पर्सन टू सच ऑर्डर ए फ्रेश मेरिट लिस्ट मध्य प्रिपेयर होइथिला एट दिस स्टेज सम ऑफ द कैंडिडेट सिमिलरली सिचुएटेड एज द पिटिशनर ग्रीवियंस सबमिट करथिले अथॉरिटी के पाखरे 2 और 3 that the vocational candidates and upashastri candidates had obtained those certificates by suppressing the fact of their passing +2 arts commerce science examination earlier से माने अभियोग करथिले जे माने लोचाई छंती +2 आर्ट्स साइंस कॉमर्स को पास करि साला परे मध्ये से माने vocational कोर्स करि छंती which amounts to fraud जोटा कि फ्रॉड बोली से माने अभियोग करथिले some bona fide candidates having vocational qualification approached this court जोटा कि 7478/11 which was disposed by the order dated 24/3/11 डायरेक्टिंग DPC को डायरेक्शन दिया जायथला कंसीडर करिया पई एवं डिस्पोज करिया पई रिप्रेजेंटेशन पिटिशनर विदिन 3 वीक्स पार्टी नंबर 2 and 3 conducted inquiry to allegation regarding submission of fake certificate but without completing the same published a second merit list including their names with the remark that inquiry is pending against the vocational and upashastri candidates being aggrieved तो एनक्वारी दिया जाइथला एनक्वारी कंप्लीट हो नाला तापर सेकंड मेरिट लिस्ट मध्य आसी जाइथला सम सिमिलरली सिचुएटेड पर्सन्स इंक्लूडिंग द पिटिशनर्स अप्रोच करथिले कोर्ट को WPC नंबर 18256/2011 रे जोटा कि डिस्पोज होइतला 15/7/11 रे विथ डायरेक्शन अथॉरिटीज टू कंप्लीट द एनक्वारी कंप्लीट करिया पई दिया जाइथला देखंतु गोटे जने न्याय पाइबा पई केतोटी रिट पिटिशन करबा को पडुची इट वाज हाउएवर मेड क्लियर दैट authorities shall not appoint the candidates against whom the inquiry is pending till it is complete. Notwithstanding such orders, the opposite party number 2 and 3 asked vocational upashastri candidates to furnish an undertaking that they had not passed +2 arts, science, commerce,
बिफोर ऑब्टेनिंग वोकेशनल उपशास्त्री सर्टिफिकेट। तो से कोर्टे कही आम पोस्टिंग देना किंतु तापर करते अंडरटेकिंग नहीं जे से वोकेशनल उपशास्त्री कोर्स करने पूर्व +2 आर्ट्स साइंस कॉमर्स पढ़ी ना बोली। द कंसर्न कैंडिडेट सबमिटेड इंडिविजुअल अंडरटेकिंग दैट they had not passed any other +2 course examination other than vocational उपशास्त्री and if such undertaking is found to be incorrect they shall be disengaged from the post of शिक्षा सहायक। as such opposite party number 2 and 3 issued conditional engagement order in favor of the candidate making it subject to order of this court जोटा कि यही कोर्टर ऑर्डर को रेफर करते जोटा कि कंडीशन रखी सेटा जेहेतु the inquiry proceeded thereafter and its completion it was established that all those candidates had passed +2 examination earlier but had suppressed such fact to further prosecution vocational upashastri course in contravention of the CHSE Act regulation Sanskrit University regulation. Accordingly all 6 candidates including the private opposite party number 4, 5 and 6 were issued with second show cause notice for disengagement। ताको disengagement पाई दिया जाला कहीं से प्रमाण होता से डुअल कोर्स करिसेंती। said private opposite party approached this court जोटा कि 32,024/11 से गोटे केस कले इंटरम ऑर्डर प्रोटेक्शन दिया जाइथिला। at this stage the petitioner and similarly placed candidate who had been deprived of appointment because of inclusion of the vocational उपशास्त्री candidates filed independent writ application पुणी थे से केस कले चैलेंजिंग कले सो कॉल्ड फेक कैंडिडेट्स को। several such writ application having been filed all were clubbed together and finally disposed of by common order जोटा कि 5/5/14 दिया जाता 5077/14। after taking note that relevant fact a coordinate bench of this court inter alia had as follows: in view of the above the collector cum DO SSA Bhadrak is directed to take a decision by taking into consideration the show cause reply along with the enquiry report after supplying copy of the enquiry report to the petitioner and affording reasonable opportunity of hearing them. It is needless to mention that if the petitioner have committed fraud by submitting the +2 vocational course certificate contrary to the CHSE Act and the regulation then they shall be disengaged and consequently the merit list shall be recast। तो कह जाइतला जे से माननकु आउ थरे सुजोग दिया जिवो जदि से मान इलीगल हेतिबो से माननकु डिसएंगेज करा जिवो आउ थरे मेरिट लिस्ट तैयारी करा जिवो। तो देखंतु ये रही पूरा डिटेल्स पूरी यूनिवर्सिटी मध्य करा जाइतला सर्टिफिकेट एनक्वारी काउंटर एफिडेविट मध्य फाइल करा जाइतला प्राइवेट अपोजिट पार्टी तरफ not having cancelled the certificate issued in her favor cannot declare the same as illegal void। moreover the restriction regarding appear the candidates in vocational examination after passing +2 examination came in the year 2011 whereas she had obtained such qualification in the 2008 से माने 2011 जो रूल आसीतला किंतु से माने 2008 रे ये क्वालिफिकेशन एक्वायर करथिले। having already issued a certificate it would not be permissible for the authority to cancel से कैंसल करें ना बोली से सपक्ष बहुत जुक्ति बाढ़ी। हार्ड मिस्टर MK साहू लर्नड काउंसिल फॉर द पिटिशनर मिस्टर SN पट्टनायक लर्नड एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट DN रथ लर्नड काउंसिल अपियरिंग प्राइवेट अपोजिट पार्टी नंबर 2 से मैंने आर्गू करिसेंती एक्सेप्टेड दैट vocational उपशास्त्री कैंडिडेट्स हैड सप्रेस्ड मटेरियल फैक्ट्स and had submitted false undertaking only for the purpose of getting engagement as शिक्षा सहायक। It was not open to the collector to not interfere the matter। ये गुड़िक सब देखु पूरा डिटेल्स रही सप्रेसन करी से माने पाइथिले परिशेष आर्गुमेंट होइछि। आर्गुमेंट परे कोर्ट व्यू को आसीछंती विभिन्न कथा को नजर को नहीं विभिन्न केस को मध्य रेफर करा जाइछि। रेफर कला परे दुई पक्षर डिसीजन नहीं छंती जज देखंतु कोन नहीं छंती। हैविंग हिमसेल्फ हेल्ड दैट द कंसर्न कैंडिडेट्स वर गिल्टी ऑफ सप्रेशन ऑफ फैक्ट द कलेक्टर स्टिल प्रोसीडेड टू अपलोड देम स्मार्ट एनफ फॉर डूइंग सो। दिस कोर्ट रिफ्रेंस फ्रॉम सेइंग
तो देखते रही saying anything more in this aspect, it would suffice to say that such absurd reasoning cannot ever be countenanced in law. Thus, from a conspectus of the analysis of the fact and law and the discussion made herein before, this court finds that the private opposite parties having suppressed material facts before the appropriate authority at the relevant time could not have been selected for appointment and actually appointed. In the process, the fate of the bona fide candidates like the petitioner was sealed. This court therefore has no hesitation in holding that the impugned order cannot be sustained in the eye of law. Eye of law, आईन आखिरे एक order रही परिबो नाही. In the result, the writ petition is allowed. The impugned order number annexure bar is hereby quashed. Collector order को quash कर देइछन्ति. The opposite party number 2 and 3 is directed to recast the merit list by excluding the vocational उपशास्त्री candidates. Opposite party number 4, 5, 6 रही and by using appropriate order of engagement in favor of the petitioner either as शिक्षा or in any equivalent post without any further delay and in any case not later than 4 months. 4 मास भितर तांको आउथरे फोरकास्ट करी लेटर तांको पोस्टिंग करिया पई कहा जायछि. तो निश्चित भाव गोटे ऐतिहासिक निष्पत्ति रही. देखिबा परवर्ती अपडेट.